Okay, Smarth. So, thanks a lot for your time you've given to me today, and a big congratulations to you for getting selected into very prestigious TUM Technical University Munich through your GATE score. Thank you very much, sir. Congratulations. Thank you very much, sir. All because of you, because of Sayam sir and Rahul sir, helped Okay, me a that's lot great. during. That's a great, Smarth. GATE के through Indian universities में तो admission होता ही है, we know that. बट गेट के थ्रू फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन होता है, हमें ये भी पता था, बट बहुत कम बच्चे, वेरी लेस स्टूडेंट्स एस्पायर फॉर दैट, गो फॉर दैट, और मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स कम थे. Thanks to you, I have an example now, and through you we can spread lot of information among masses now, among the students about these universities. So Smarth, you have got selected, you are from computer science background, you have got selected into this very prestigious university TUM, and if I'm not wrong, it has QS ranking 35, global Yes, sir. QS ranking 35, and for computers you were telling me that it is 14th. globally 14 rank. Very, Yes. very good. So it is really no doubt about that, it is a great achievement on your part. Sir, actually, I also didn't know about it much, but मेरे uncle हैं, like मेरे मामा जी, all my brothers and sisters, they motivated me to like apply abroad because career abroad is in, Really good. especially in computer science, it is very good. No doubt about that, Smarth. So Smarth, before we start this entire exploring the opportunities in this direction, and I ask you more about this, I'm very sure this is going to be very informative for students, and बहुत सी information आपसे निकल के आएगा. So Smarth, I want your very brief introduction. आप कहाँ से हैं? When did you graduate? I think you are still in graduation. So what is your CGPA? What was your GATE score in computer science? And what is your category? That information first. So I am Smarth Bakshi and I am from Delhi, from New Delhi. I am currently in my 8th semester of Bachelor's in Computer Science and Engineering. I am pursuing from the Punjab Technical University, and my current CGPA is 9.4 on a scale of 10, and my GATE score is 557. GATE 2020, GATE 2021 score is 557, and my category is general. Okay, so your CGPA, how much CGPA you said, Smarth? Sir, up till the 7th semester, it is 9.4. 9.4. And you are graduate from Punjab Technical University, right? Yes, sir. Guru Nanak Dev Engineering College. Ludhiana. Yes, sir. Okay, GNDE Ludhiana. That is quite prestigious college, right? Smarth? Yes, sir. Yes. Great. So Smarth, now I come to second part. That is through GATE, which are the universities globally which consider GATE score for admission? So, like as we know, Indian universities accept this GATE score, but still there are a couple of global universities that accept GATE score. To name a few, there are basically 4 universities. The first one is Technical University of Munich, Germany. Second one is RWTH Aachen, that is also in Germany. That is a prestigious university. That is a public university. The third one is the NTU, that is Nanyang Technological University in Singapore. And the fourth one and the last one is National University of Singapore, NUS. Okay, so these are the 4 universities which you can target through your GATE score. Great. So now Smarth, I'm sure you must have applied in India also, and you must have got calls in Indian universities also, but this today's interaction is all about TUM, Technical University Munich. First, you please tell us something about TUM. Where is this, and what ranking and everything first about TUM, and then we go into this further. So TUM stands for Technological University of Munich, that is in Germany, and it is the Gachi campus that basically accommodates for the informatics course. Informatics is basically computer science in Germany, and it is ranked at 35th position in globally, considering all the courses, and specifically for computer science and engineering, like informatics they call it, it is at 14th rank. And since it is a public university, that falls in the bracket of TU9 universities of Germany. So the semester fees is pretty low, that is 144 euros when we convert it to like INR, that stands for around 15 to 14,000. That is pretty cheap. And the professors at the university are phenomenal. Like after exploring their website, the faculty website, I've come to know that many of the professors have done research back then in 2007 or 8 that is being implemented and coming into action in this era, like 2019 or 2020. Okay. Yeah, so, in my considering my field of like machine learning and computer vision. So आप कौन से field में, which field you are going to pursue your masters? Which field you are going? So up till now I've targeted like
the things which I like is artificial intelligence, computer vision, and machine learning. Okay. So this Smarth, this TUM entire course must be in English, right? Yes, sir. Yes, sir. It is an English taught program. Okay. And other than computers, other other background engineers can also join this course. I mean, TUM, they can also go. Yes, sir, for sure. Others can also join, but the thing is that computer science and information technology branches have an edge over the others in the term of that you can pursue English taught master's program. Okay. Mm-hmm. Others like mechanical, civils engineers can also pursue a English taught program. But the thing is that their market is purely in German. Like in computer science, at least you have 20% to 30% market open to those who speak English and know just a bit about German. But in case but keeping in mind of like other branches, they need to have German skills in order to get a job. At Great. least for me as well, I need to have German skills when I reach the job market in Germany. Great. So Smarth, now I come to second part. You told me about Technical University Munich is great university, especially for computer science graduates, as you said, and professors are also very good over there. Now I come to second part, which student normally ask, and my questions are in that same order which students will ask you. So my next question to you is cost. खर्चा कितना लगेगा, जेब में कितना पैसा चाहिए, and अगर मेरी जेब में एक भी रुपया नहीं है, can I also dream to get into TUM and pursue my masters from there? Yeah, for sure, sir. So first of all, I'll talk about the requirements. So requirement is in order because after the Barjana you need to have a visa. For that very purpose, you have to show a blocked account having a sum of 10,200 or something euros. That basically converts to around 9,90,000 or 10 lakh, more or less. वो बैंक में आपको शो करना पड़ेगा. वो सर ब्लॉक अकाउंट में शो करना पड़ेगा and that remains logged for the entire period of 2 years and that you have to link it with other bank in Germany. And क्या होता है सर, monthly they give you 850 euros into your खर्चा है monthly. जो आपका खर्चा monthly खर्चा. So you can't withdraw that amount all at once. You have to like get it monthly by month. So that is the amount you have to spend. What else? Yes, sir. What yes, else? sir. That is the amount basic the living expense and as I initially talked that fees is around 145 euros for 6 months for a semester. So that is around 15,000. That is the semester cost. That is minimal. Living expense is only there, and moreover, if one has nothing in his pocket, he can still dream of going to the technical. No, but this 800 euro which you said, that includes living expenditure also, right? That is living expenditure, your rent, your food. So suppose today I have 10 lakh rupees with me, right? Do I need to have more money also, or only 10 lakh में काम चल जाएगा? That 10 lakh you have to keep deposit it in the block account. और अपने पास कितना होना चाहिए additional? अपने पास सर एटलीस्ट 4 लाख to 5 लाख होना चाहिए बिकॉज आपको जाके वहाँ पर रेंट एक महीने पर नहीं मिलेगा. यू हैव टू पे 3 to 4 मंथ का आपको एक्स्ट्रा लेके सिक्योरिटी वगैरह भी रहती है सर जी. मतलब 14-15 लाख रुपए लगेगा. यस सर 10 लाख आपका ब्लॉक हो जाएगा, बाकी ऊपर का थोड़ा एक्सपेंस. तो ये बैंक्स दे देते हैं क्या पैसा? सपोज आई डोंट हैव 10 लाख एज ऑफ नाउ. Yes sir, yes sir, absolutely they are ready to give you loan considering your scores, considering your profile, considering the profile of the university. And since abroad की ये जो मैंने 4 universities बताई हैं, they are phenomenal universities. Yeah, they are reputed universities. So considering those profiles, a student will surely get loan. And moreover 15 to 20 lakh का loans private banks are ready to give. 10 lakh का loans भी government without collateral दे देते हैं. And इनका interest rate is around 10.5% से लेकर 12%. And moreover, you have a flexible time period for you to pay, like 15 years तक आप अपने कोर्स के खत्म होने के बाद, like after the 2 years of the completion, they give you around 12 to 15 years to pay them back. So usually after like you have great earning prospects and after these universities, so usually students pay this amount in first 2 to 3 years of their graduation of their job. And we see that even in IIT Hyderabad the self sponsored में इतना खर्चा आ जाता है, 12-15 लाख वहाँ पे भी लग जाता है. नीटी बॉम्बे में 12-15 लाख लग जाता है. IIMS के अंदर खर्चा है. So Technical University Munich में is a reputed institute and you get international exposure, you know, students from all over world. Yes sir, in the sponsored programs that is the course fee. Here it is the living expense. Course fee तो है ही नहीं आपकी because there is no tuition fee. उतना आप जाओगे तो रहोगे उतना खर्चा तो आएगा.
अच्छा समर्थ, अब एक नेक्स्ट इससे लिंक्ड क्वेश्चन के 2 साल के बाद प्लेसमेंट क्या सिचुएशन, क्या ऐसा हो सकता है कि साहब मेरे को नौकरी ना लगे, ऐसा हो सकता है क्या? सर जैसे कि अब मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करूंगा, बट मैंने जितना भी रिसर्च किया उसके बेसिस पे आफ्टर द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ योर मास्टर्स स्टूडेंट्स गेट इंटर्नशिप्स, बिकॉज कंपनीज के जॉब फेयर्स होते हैं और कैंपस पे भी मोर ओवर स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी अप्लाई करते रहते हैं, दे गेट सिलेक्टेड और वो इंटर्नशिप्स फिर जॉब्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यूजुअली मैंने तो अभी तक ऐसा कोई केस नहीं देखा कि जिसकी ना लगे, अच्छा, एटलीस्ट और इन इंटर्नशिप माय वो पेड रिसर्च। होती है, उसमें पैसा मिलता है Yes, क्या? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Internships paid होती हैं. Like on the basis of my research, I've come to know that 1,000 to 1,500 euros per month there are students who are able to make in internships, और as a work student थोड़ा कम हो जाता है, but internships there are students who are able to make 1,000 to. तो समर्थ 2 साल का कोर्स है ये, राइट? Yes, sir. 2 साल में अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या हैं वहां पे? और क्यों, ये तो खर्चा आपने बता दी, 14 लाख रुपए खर्चा है, 14 लाख। अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या है जो मैं सोच सकता हूँ कि समर्थ कैन अर्न देयर इन 2 years? In 2 years, sir, like first semester में तो because they don't give internships on the basis of their bachelor's, because since Okay. it is from some other country, तो वो बैचलर्स के बेसिस पे तो आपको नहीं मिलती फॉर द फर्स्ट 6 months. यू कैन डू वर्क स्टूडेंट जॉब्स ओवर देयर. So usually in Munich what the rate is like 11 to 15 euros an hour. Like odd jobs first 6 months आप कर सकते हो, and then after you get your first semester का score, then you can apply for internships and work student jobs in your own domain. So they have a good pay. If your company is pretty well, the minimum they'll pay you 15 to 16 euros an hour. So that an hour. And sir, for students, they can work for part time, that is 20 hours per week. That is the maximum limit. And so week में 4 days, so that becomes a मतलब pretty much 3-4 better आवर्स amount. अगर आप काम करें तो अपना पूरा 800-900 यूरो निकाल सकते हैं। Yes sir, लिविंग एक्सपेंस तो आप निकाल सकते हो आराम से। तो कहना इसे कि इवन 14 लाख भी आप को नहीं चाहिए, मतलब 5-7 लाख तो कमाई नहीं लोगे, नहीं 7-8 लाख नहीं? हाँ सर वो शो करने के लिए तो आपको चाहिए, वहाँ शो जाके करने आप के लिए कमा कर, चाहिए, पर वहाँ आप जाके अर्न कर सकते हो। ये सर 1 साल का खर्चा है ना सर, तो आप वहाँ पर कमाओगे, यू विल सेव दिस अमाउंट, this blocked amount will remain blocked in that particular amount only and will be used for getting your visa for the next. इतना अमाउंट आपको आगे भी शो करना पड़ेगा, या फिर यू हैव टू शो के यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज पेइंग यू फॉर ऑन रेगुलर बेसिस. Okay, that's great. Okay, now Samarth, so yes, safe looks like safe opportunity and very good opportunity. अब Yes, मैं sir. नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट पार्ट इज कैसे सिलेक्शन हुआ आपका, व्हाट वाज द प्रोसीजर, एंटायर प्रोसीजर प्लीज एक्सप्लेन नाउ। So sir, I will target for the winter semester of each. Since हमारा गेट एग्जाम फेब में हो जाता है, लाइक इस बार कंप्यूटर साइंस का 13 फरवरी को एग्जाम हो गया एंड मार्च में उसका रिजल्ट भी आ गया था. सो मार्च में रिजल्ट आने के बाद TUM की फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर द विंटर सेमेस्टर डेडलाइन इज टिल 31st of March. But since I had my result pretty late, like gate ka result ही was in the March end or the last week of March, so I just wrote an email to them and they considered me कि हमारी जो फाइनल डेडलाइन है दैट इज टिल 31st of May, वीजा लगाने का दैट इज ऑल अप टू. तो 31st of May तक स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, स्टार्टिंग फ्रॉम January to 31st of May. This is the deadline. Then you need to have first of all BPD, that is granted by UniAssist. BPD is basically a document that converts our Indian grades to the German grades actually. So like I had a CGPA of 9.05 up till my 6th semester, that was converted to 1.4 German. And as we know that German grade are from 1 to 5 and 1 is considered the highest and 55 pointer is considered वो as कहाँ the से lowest. मिलती है जो आप बोल रहे हो, कन्वर्शन कहाँ से मिलता है? सर वो UniAssist से मिलता है. UniAssist एक पोर्टल है, या कह सकते हैं इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्मनी दैट बेसिकली कन्वर्ट्स आवर ग्रेड्स. So for that very purpose, I sent my transcript issued by my college, then my CV and the grading system of my university. So ये तीन चीजें use करके they just converted into that your German grade. And for that, for the first college you apply, you need to pay 75 euros, around 6800 rupees होते हैं ये. तो ये आपको भेजना होता है एंड बाय पोस्ट आपको ये कुरियर करना होता है उन्हें. ठीक है, ठीक है. तो फिर वो कन्वर्ट करके दे इशू यू अ BPD दैट इज specifically in the name of that particular university. Like in my case it was T1. तो वो VPD आ जाएगा आपके पास. That will take a pretty much time. Like I sent my documents on 6th of April and paid the payment on 5th of April. I got my VPD on 2nd of May.
because my documents reached them on 15th of April also. Okay. So that takes pretty much time, and VPT ho jayega, then you have to write. In the meantime, what you can do is you can write a letter of motivation. You can write a scientific essay. For the topics of scientific essay, you can find it on their website. There are a couple of topics out of which whatever suits you have to write on it. And the scientific essay needs to be in IEEE format only. Then scientific essay motivation letter, your grades, your transcript, your CV that is in a European format that is mentioned on the website of the university, and your passport, your curriculum analysis. Curriculum analysis basically helps them get to know कि हमारे जो भी हमने courses किए, जो भी हमने subjects पढ़े हैं, that are in complete alignment of their German bachelor's or not. Then internship के आपके certificates, जो भी आपका work experience है, अगर कुछ है तो, like in my case there were work experience related to internships only. And ऐसे होता है, and like आपने अगर कोई वो formal training करी है, vocational training, तो आप उसका सर्टिफिकेट दे सकते हो. कोई नॉन स्कूल एक्टिविटी लाइक यू पार्टिसिपेटेड इन एन एनजीओ, और आप किसी सेल में, कोई सी सोसाइटी में आप रहे हो, तो वो सब की आप शो कर सकते हो. दीज आर द डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू अपलोड ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल, एंड यूनिसिस्ट की वेबसाइट पे आपको अलग से अपना वीपी. सो हाउ मच इट कॉस्ट यू? So 6,700 or 7,000 more or less for the VPD. Then base 8,500, around 9,000. Okay, so 9,000 में आपने सारा कर लिया. Now tell me, you were talking about the level 1, level 2 also. Level 2 was the interview and all. Yes sir. So considering the application admission procedure, sorry, so it is divided into 2 levels. The first level is where they basically analyze on the basis of their internships, on the basis of their work experience, on the basis of the grades you've got, basically on the basis of all the things that we have submitted to them. That is level 1. They grade you on a point of on a scale of 100. So out of that, if you get greater than or equal to 70, you are directly given an admission. So in my case, what happened was I was stuck at 68. I was short of 2 marks. So I was given an opportunity to participate in the interview. That was the level 2. So in the level 2, you have to appear for an interview. Basically, uski call aa jati hai in a week or so, and 2 to 3 days में वो interview हो भी जाता है. So level 2 is all about interview. And talking about the interview, it is nothing but checking your technical skills and your motivation to join the university. Okay. Because there is a professor and an assistant like keeping an eye on you, and आपके टेक्निकल स्किल्स चेक करते हैं. लाइक मेरे इस केस में उन्होंने मेरा DRDO की जो इंटर्नशिप थी उसका पूरा प्रोजेक्ट के बारे में पूछा. They even questioned me how you validated your result, who was guiding you and all everything. Then the professor asked me theory of computation से he asked me 2 questions like finite state machine and Turing machine के concepts, and then the assistant asked me questions related to linear algebra, matrices and all. So and then they check your motivation, like why you are joining Technical University of Munich, why do you wish to come over here, how many languages do you know, what was your bachelor's all about, were you asked to produce a thesis or it was a compulsory internship type bachelor's and all, everything about it. Okay. So how long was the interview? Interview usually takes 20 to 30 minutes, but in my case, since they were pretty impressed, so they just allowed me to leave in 15 minutes. Okay, Smarth, you told me about the research proposal also which you submitted in the first level. What was that? So that was basically letter of motivation. Letter of motivation. So how letter of motivation is different from SOP or SOR? No, I won't say that. Like SOP is letter of motivation only. SOR is pretty much different from. So what do you typically write in letter of motivation, if you can tell me? So letter of motivation, I basically bifurcated it into 4 to 5 paragraphs, I would say. And in the first paragraph, I just wrote about my preliminary education and how I got motivated towards this course. Okay. Yes, because I basically referred my sister who is going to join University of Pennsylvania for masters. Okay. So she guided me very well, my sister. So in the first paragraph, I wrote about like my first of the project that I did in my bachelor's that was related to machine learning. Then second project I wrote, and third project, like similarly in paragraphs wise.
Then the fourth and fifth paragraph were all about my motivation, talking about the laboratories at TUM, talking about the professors whom I wish to collaborate with in near future, and all about my motivation that Okay. what I'll pursue in my future. I'll pursue a PhD or do a job or anything. That is up to the person who's applying. Okay. So any tips how it can be made very good? Motivation letter. Motivation letter is basically something that describes you, because you are applying to them virtually. You're not there while they are reading your recipe. So it needs to be crisp and it needs to be up to the mark and should basically frame you as a person. Like, how are you and how are you motivated for this particular? So they want to see the purpose why you want to come. Huh? As yes, you rightly said, yes, it is SOP. exactly. तो उसमें आपको बताना है कि आप क्यों उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, and as for a that person, particular course, for that particular course why we join. So they don't want you to tell research area or something like that. They don't want that. They don't specifically mention that, but still in my SOP I wrote about that I'm interested for that. Because आपको कुछ तो mention करना ही पड़ेगा ना कि हम क्या करेंगे वहाँ. You have to mention that कि मैं ये, because informatics in itself is a course that encompasses every field in computers. Okay. उसमें software engineering भी आएगा, उसमें databases भी आएगा, उसमें artificial intelligence भी आएगा, उसमें computer graphics भी आएगा, उसमें आपकी theory of automation, computation से related सब कुछ आएगा. But आपका focus होना चाहिए कि since I had been interested with this particular field, so I feel like कि मैं इसी में pursue करूँ, and these are my projects that I have done, and these are the professors under which I would like to pursue my informatics. समर्थ, मेरे को ये बताओ कि what do you think इंटरव्यू में क्या चीज उनको आपकी बेस्ट लगी होगी? What was your best shot in the interview? Sir, confidence. I know that. You are confident boy, yeah. Confidence ही है सर, और आपका मोटिवेशन अच्छा होना चाहिए, और टेक्निकल स्किल्स अगर आपकी एक दो ऊपर नीचे भी हो जाता है आंसर, लाइक मैं आपको बताता हूँ, दे आस्क्ड मी फॉर अ क्वेश्चन इन लीनियर अलजेब्रा, they asked me related to eigenvectors, so मैंने explain and they were quite satisfied. फिर उन्होंने they started digging deep, उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा, that I answered. लास्ट में उन्होंने आके कुछ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा. I explained them, but considering like my level I wasn't able to produce that, so they were quite satisfied. तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इससे, बट आपका मोटिवेशन मैटर्स एंड आपका कॉन्फिडेंस मैटर्स. Good. अच्छा, Smarth, tell me one thing, like this normally this German universities they ask for IELTS or TOEFL score. Yes, sir, yes, sir. So when you did they ask anything related to that, and how did you prove your English proficiency for this course? Yeah, so sir, they do like technically talking about Technical University of Munich, they specifically ask for your English proficiency. For that you can submit there are three options for you to go with. The first one is either you can submit your IELTS score, or you can submit your TOEFL score, or the third option is you can produce a document from your university stating that your entire bachelor's was in English and examinations were also conducted in English. So I produced a bona fide form issued from my college that my bachelor's is in English entirely. So उसका format आप ही ने बनाया कि कैसे कैसा लिखना है and everything is to be नहीं, वो तो सर आपके कॉलेज के ऊपर है, because that is issued by the registrar आपके कॉलेज का. तो जो फॉर्मेट आपके कॉलेज में फॉलो हो रहा होगा उसी पे आपको बस उसमें ये लिखा होना चाहिए, आपका नेम होना चाहिए, यूनिवर्सिटी रोल नंबर होना चाहिए, that you are a full time student in this university and you have completed it. That is, so that is required. Great. Now Smarth, I come to our last part of interaction in which I want to take this discussion. You have 557 gate score and general category student in computer science. Yes. And your CGPA is very good. There is a peculiar trouble in I'll say with the students here who are writing gate. They keep on waiting. You are still in final year. They keep on waiting years after years after year for some hypothetical charismatic score in gate. उनको एक मिसकंसेप्शन है कि जब तक 700-800 नहीं आ जाएगा भाई तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा. आई डोंट नो ये मैसेज कहाँ से आया क्या है. और आपने देखा होगा YourPedia पे मैं हर दिन ऐसे बच्चे ढूंढता भी हूँ और उनका लाता हूँ जिनका 300 कुछ है, जनरल कैटेगरी है, बच्चों का बिल्कुल 400 कुछ सिलेक्शन हो रहा है. और आपका भी स्कोर मैं ये बोलूंगा कि बहुत अच्छा भी नहीं है, एवरेज स्कोर है, 557 स्कोर है जिसको मैं एवरेज बोलूंगा. इस स्कोर पे आपने वर्ल्ड की QS रैंकिंग की
5th रैंक की यूनिवर्सिटी को हिट मारा है और कंप्यूटर्स में 14th रैंक की यूनिवर्सिटी को हिट मारा है. What is your take on that? Why students not utilize their scores and start career instead of years after years? और मैंने आपको जो इंटरव्यू लेता हूँ उसमें आप देखोगे 4 साल 5 साल 6 साल से बच्चे बैठे हैं. 4-5 साल बिग अमाउंट yes ऑफ sir पीरियड. yes sir yes sir 4-5 साल में तो you can reach heights sir I would say even तो if you are a इसका score क्या करें, इसका क्या कर सकते हैं स्मार्ट? sir what I believe is information कम है लोगों को like initially मेरे को भी नहीं थी बट मैंने सोचा था कि अगर मेरा इतना ही आया गेट स्कोर तो आई वुड कंटिन्यू विद द जॉब एंड आफ्टर 2 or 3 years आई विल I had that plans but since अभी अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली तो आई जस्ट went with the flow. I would recommend कि इतने साल इन्वेस्ट करना like 2 to 3 years that to एक ऐसे एग्जाम में जिसमें क्लियर करने के बाद नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर कैपेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ योर क्या आपकी कैटेगरी क्या है उसके बेसिस पे आपको जज करा जाता है. तो गोइंग फॉर that particular exam that too twice or thrice in your career in your life that is a complete waste I would say. Sorry for being if I am being harsh but it is not that मतलब गेट को इतने साल नहीं कि एक्चुअली क्या था स्मर्थ की पहले तो पीएसयूज वगैरह की सीट्स बहुत आती भी थी, समझ आता नहीं है ना सर. कंप्यूटर अब सीट्स कम होती जा रही हैं, कंप्यूटर साइंस में वैसे भी नहीं है ही नहीं सर. और बाकी ब्रांचेस में कम हो गई हैं. हाँ सर वो तो और उसको भी छोड़ो, जिन ब्रांचेस में पीएसयूज नहीं है जैसे कंप्यूटर्स के साथ साथ और भी ब्रांचेस हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन है और ब्रांचेस बहुत सी हैं जिनमें मेटलर्जी जिनमें पीएसयू नहीं है. वो स्टूडेंट भी वेट करते रहते हैं कि साहब हमारा 800 आएगा 700 आएगा तब हम जाएंगे आगे स्टार्ट करेंगे करियर. इंस्टेड दे शुड ट्राई टू एंटर इनटू सम इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस. रियली उसमें एफर्ट करें, उसमें एफर्ट करके वो जॉब निकाल सकें. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ये सर अगर किसी का रिसर्च में है इंटरेस्ट लाइक कंप्यूटर साइंस में रिसर्च का इंटरेस्ट है, आपकी डोमेन में अगर रिसर्च का इंटरेस्ट है तो इवन ऑन द लो स्कोर आपको पीएचडी तो मिल ही जाता है. जैसे मेरे स्कोर पे आई गॉट ऑफर्स ऑफ पीएचडी फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे इन कंप्यूटर साइंस, आईआईटी हैदराबाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और एमटेक का भी ऑफर आ गया था सेकंड राउंड में ट्रिपल आईटी दिल्ली से. तो अगर रिसर्च में है आपका इंटरेस्ट तो पीएचडी परस्यू कर लो, मैं तो यही कहूँगा. और अगर आपका कम स्कोर आ रहा है तो इट इज बेटर टू परस्यू समथिंग एल्स. लाइक आप अगर फॉरेन जाना अफोर्ड कर सकते हो दैट इज आप 2 साल में निकाल ही लोगे मेरे को लगता है. जितना मैंने लोगों को पे रिसर्च किया है तो 2 साल बाद दे स्टार्ट अर्निंग अबाउट बिकॉज अब्रॉड वो 2 साल की स्ट्रगल होती है और आप कर जाते हो उसको. तो वो एक बेटर ऑप्शन है. उसके साथ अगर जाते हो तो यू विल बेसिकली आपके ईयर्स बचेंगे आपके करियर के जो आपके बिकॉज 20 to 30 इज कंसिडर्ड दैट इज द एनर्जेटिक फेज ऑफ योर लाइफ. तो आप अगर इसमें 2-3-5 साल ही उड़ा दिए तो आगे तो फिर अपने लिए भी कमाओगे, फैमिली के लिए कमाओगे, कंट्री के लिए भी कमाओगे. यस सर बाहर जाके एक्सपोजर मिलेगा. और अगर आपको इंडिया में भी कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है कम स्कोर पे बट आप एम ही आईएएससी के लिए कर रहे हो और उसके लिए अगर आप मतलब कॉन्फिडेंट होना भी दैट इज गुड कि आपको अपने को कॉन्फिडेंस है तो आप परस्यू करो, बिल्कुल परस्यू करो. बट देयर इज अ लक फैक्टर व्हाट आई बिलीव. एक लक फैक्टर होता है, चीजें नहीं सही होती उस 3 घंटे में बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी एंड इन माय मॉक्स ओनली आई वाज गेटिंग इन द टॉप 200 और टॉप 300 मतलब ऑल इंडिया लेवल पे. बट वो 3 घंटे में नहीं हुई चीजें सही तो फिर रुक थोड़ी ना जाना, आगे बढ़ते रहना ना. मतलब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अच्छा समर्थ इसमें मेरे को एक बात बताओ, जैसे इवन निटी बॉम्बे में बच्चा जब जाता है तो उसका 10-15 लाख का खर्चा है, सेम आईएम्स के अंदर है, सेम हैदराबाद में अगर आप एमटेक करते हो उसमें खर्चा है. और एमएस के कोर्सेज जितने हैं जर्मन वगैरह में उनमें एवरेज खर्चा अगर देखा जाए तो 15 लाख के आसपास पड़ता है. अब स्टूडेंट्स में लिविंग एक्सपेंस, अब स्टूडेंट्स में एक मिसकंसेप्शन है कि साहब 15 लाख तो मेरे पास है ही नहीं. नाउ 15 रिक्वायर्ड नहीं होता है, आपने बताया कि बैंक दे देता है, इतना पैसा चाहिए भी नहीं. और दूसरा एक क्योंकि सर यहाँ पर क्या होगा कि निटी बॉम्बे में इनको 15 लाख अभी ऐसे इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स में देना 6 महीने की दे दी फिर 6 महीने की दे दी तो वो लगता नहीं है. जैसे मेरी बैचलर्स को ही देखो तो अपना 4-5 लाख तो बैचलर्स पे भी ऐसे ही लग गए बट वो हमने दिया 50-50 हजार करके तो हमारे को नहीं फील हुआ. अब यहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन खड़े हुए आपसे बोल रहे हैं कि 10 लाख आप कर दो अरेंज, आपके 2 साल का पूरा हो जाए. बट फिर आपको ये भी तो देखना कि 2 साल में मेरे को बॉदर नहीं करना पड़ेगा, मेरे को अपने करियर पे फोकस करना होगा और इंटर्नशिप्स में काम करना होगा. तो दैट इज द थिंग. बहुत बड़ा रिस्क नहीं है आई थिंक. अगर अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है
100 रैंक के अंदर यूनिवर्सिटी मिलती है, यस सर, तो एटलीस्ट मैं इन्वेस्ट करो। ये तो कहूंगा कि अगर आपका गेट स्कोर आता है, बिकॉज इनको गेट स्कोर दे नीड एटलीस्ट 90 परसेंटाइल, जैसे मेरा 97.82 के आसपास परसेंटाइल बैठा था, तो दे नीड मिनिमम इनको 90 परसेंटाइल चाहिए। 90 परसेंटाइल क्वालिफाइज, मतलब एक स्टूडेंट जो इज बेसिकली जस्ट पासिंग ओनली गेट, तो ही कैन आल्सो अप्लाई। मतलब जिसके 40 एक नंबर हैं वो 90 परसेंटाइल हिट कर बिल्कुल जाएगा। सर, आराम से सर, आराम से, बिकॉज जो जस्ट पास भी हो रहा है वो भी 90 परसेंटाइल से तो एटलीस्ट ऊपर ही हो, व्हाट आई बिलीव। तो अगर आपके 90 परसेंटाइल से ऊपर हैं तो आप अप्लाई करो। अगर आप लाइक सिंगापुर के भी अच्छे बेनिफिट्स हैं, बट वहाँ पर ट्यूशन फीस है अच्छी खासी वहाँ पर, बट उसका ये है कि वहाँ पर आपका इंडिया के पास पड़ जाता है, तो कुछ लोग उस फैक्टर को कंसिडर कर लेते हैं। जर्मनी इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि ट्यूशन फीस ही नहीं है वहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। तो जो 2 पब्लिक यूनिवर्सिटीज मैंने बताई थ्रू गेट, RWTH चाकन और TUM, तो इन दोनों में ट्यूशन फीस ऑन मतलब मैक्स टू मैक्स अगर मैं लगाऊं RWTH का भी, दैट इज 350 यूरो, बट मैं उस पर श्योर नहीं हूँ क्योंकि इतनी अच्छी रिसर्च नहीं है मेरे उस कॉलेज में। तो पर सेमेस्टर तो मैं ये तो कहूंगा कि अगर आपकी जस्ट पास हो रही हो और अगर आपका आगे बढ़ने का है माइंडसेट कि आपको गेट में नहीं अड़े रहना, तो यू मस्ट ट्राई एंड कर जाओ। नहीं कोई नहीं, अभी अड़ेंगे नहीं, अभी तो हम फ्लड करेंगे, यूरोप में चलेंगे सारे लोग। समर्थ तुम चलो पीछे पीछे, और जनता भी आएगी। So that is like this. And now I come to an end of this entire beautiful session, informative session with you, Smarth. And you know, I would when you will join there, I will again interact with you and get some more information. Yes. जो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट आएगा उस टाइम तक आफ्टर इंटर्नशिप, एज यू सेड, देयर कैन बी द अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटर्नशिप। तो हार्डकोर इन्फॉर्मेशन जो है ना टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक का, वंस यू लैंड अप देयर एंड यू जॉइन देयर, स्मर्थ आई अगेन इंटरेक्ट विद यू एंड प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स फर्दर। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि स्टूडेंट्स अगर जाएंगे ऐसी कंट्रीज में और अच्छा काम करेंगे, वो एक नेशनल सर्विस है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग के मेरे को पब्लिक सेक्टर में PSUs में को 50-60 हजार रुपए की सैलरी में लूं, इससे अच्छा है आप वहां पे इतना पैसा कमाएं, वो वापस भेजें, वो हमारा GDP में काउंट होगा। व्हाट आई बिलीव इज सर, एक इंडिविजुअल से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उसकी फैमिलीज का, उसकी फैमिली का और उसके पीयर्स का। लाइक मैंने आई माई सेल्फ वॉज अ काइंड ऑफ अ स्टूडेंट के गेट ही देना है, गेटिंग इनटू IIT, वर्क लाइक स्टडिंग फॉर 2 years, गेटिंग अ प्लेसमेंट, सेटल है सब कुछ। बट आप जब, बिकॉज फेट हैज समथिंग एल्स फॉर यू, व्हाट आई मीन, जो मैंने अपने केस से सीखा। तो अब आ गया तो आ गया, उसको कुछ नहीं कर सकते, इतना स्कोर आ गया तो अब क्या करोगे, चेंज थोड़ी ना कर लोगे, फिर साल आप मारोगे अपनी जान, फिर आप अड़ जाओगे कहीं ना कहीं। 90% के साथ होता ही है ऐसा। सही है। तो व्हाट आई बिलीव इज फैमिली आपको मोटिवेट करती है। लाइक मेरे केस में मेरे मामा जी, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे भाई बहन, they were the ones who motivated me to apply and मतलब fearless होके करो जो करो। सही, they were the ones who taught me. सही है, ग्रेट। चलो स्मर्थ, थैंक्स अ लॉट। Yes sir, thank you very much for this interaction and we'll keep on interacting. Thank you. For sure, thank you.